Machiavelli most controversial advice still rules the world. When I was going through this particular paper, I really love Machiavelli or Machiavelli, whatever you would like to pronunciate. The reason is that बहुत ही practical advice दी गई है. He do not advocate for any ideal concept, but he talks about the survival. तो जो भी आपका पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आता है, उनके आइडियाज बहुत ज्यादा इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो किस एनवायरनमेंट में, किस किस माहौल में जो है उससे आए हैं, बिकॉज उससे उनके आइडियोलॉजी पे बहुत फर्क पड़ता है. बेसिकली ही सेज दैट इट इज बेटर टू बी फियर देन लव्ड, बिकॉज वेन यू कैन नॉट बी बोथ. मतलब अगर लोग प्यार करेंगे, पीपल विल बी इन लव विथ यू, इट विल बी फिकल, they might not follow your order or something, but if they fear, there will be order. So if a king is being feared, means to say somewhere people will have this thing that before making any kind of a mistake or something or crime, they have to step back. Why? Because Machiavelli lived in Renaissance, which was violent, unstable, and full of betrayal. He wanted ruler जो पावर ग्रैब करके स्टेबिलिटी ला सके इवन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल. तो टफ सिचुएशन में भी decisions लिए जा सके. He wasn't teaching cruelty, but definitely he taught survival, something that is still used in political concepts all over the world. Do let me in comment section if you have any sort of a doubt with this.